Now let's discuss about types of moving average. Now today in 2022, September 2022, thanks to more advanced computers, more advanced softwares, we can actually generate various different types of moving averages. Simple moving average is very simple. We have discussed this, that you take the number of closing prices, you divide it by the length, and you get a simple moving average. But simple moving average का एक flaw है. मैं आपको ये flaw समझाना चाहूँगा. I would like to explain this flaw to you, and then I will take you towards the other types of moving average. And what is the ideal? What is the, let's say, it's not the right way to say it, but let's say what is the best moving average. So I have a 9-period moving average plotted here. It's a simple moving average. हम इसके settings पे जाते हैं, और to make the moving average look a little, more structural, मैं इस 9 को, I'm going to increase this 9 period to, let's say, something like a 20 period. 20-22 दिन का average trading होता है in a calendar month. अगर आप weekends को हटा देंगे, 4 into 2, 8 days हट जाता है, 1-2 holidays रहता है महीने में. So in a particular calendar, आपको 20, 19, 20, 21, 22 ऐसे ही trading days मिलते हैं. So let's say 20 figure लेते हैं. And let's make it a little thicker. इसको और थोड़ा thick बना देते हैं जिससे कि आपको साफ दिखे. Now, this blue line, or by the way, if you remember that this calculation is coming from the closing prices. But when you're looking at the candlesticks, you're looking at open, high, low, and close. You're looking at all the 4 price points. So for a better understanding, for a much better clarity and better understanding, why not I change this candlestick to a line chart? This is a line chart. It has markers, which is the closing prices. And this line chart is showing us the closing prices. So हम open नहीं देख रहे, हम लोग high नहीं देख रहे, हम लोग low नहीं देख रहे. We are only looking at the closing price, and we are looking at a moving average 20 period, which is calculated from this black lines, which is the closing price. Fair? So point number 1. This is a 20 period simple moving average. Now 20 period simple moving average value comes to 107. How is it calculated? We have discussed this earlier. You take the summation of the closing prices, last 20 दिन के जो closing price है उसको add कर दीजिए, divided by 20 कीजिए, और ये जो value निकल के आएगा वो value exactly यहाँ पे, ये रहा उसका value. ठीक है? Now, if you ask yourself that tomorrow how the market will behave, जो next day होगा, उसके prices, how will it behave tomorrow? How will it open? How will it trade? Where will it close? इसका influence the recent price से ज्यादा मिलता है या पुराने price से ज्यादा मिलता है? In other words, कल बाजार कैसे खुलेगा, कल बाजार कैसे ट्रेड होगा, वो आज का बाजार का इन्फ्लुएंस ज्यादा रहेगा कल के बाजार पे, या 20 दिन पीछे जो दिन था उस दिन प्राइस ने क्या किया था उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा कल? कॉमन सेंस. आज बाजार में जो हुआ है, whatever has happened in the market right now, today, has a greater impact for tomorrow. So the recent price, the recent closing prices, the recent price behavior, these prices have a far greater influence than what happened 20 days back. Logic makes sense. But simple moving average, इसको consider नहीं करना है. Simple moving average, भाई simple है, it's a simple term है. वो आज के closing price और 20 दिन पीछे का closing price को same importance देता है. वो recent closing prices को उतना ज्यादा वजन नहीं देता. It doesn't. Now, Vajan means weight. From here comes the concept of weighted moving average, exponential moving average. Now we'll talk about weighted moving average. Abhi, it doesn't sound right. So we should give more weight. जो recent closing price है, उसको ज़्यादा importance मिलना चाहिए. उसके पीछे the prices behind it should reduce, should have a lesser influence, should have a lesser weight. इसीलिए weights were given to the recent price. For example, मैं ज़्यादा maths में नहीं जाऊँगा. I'm just going to stick to the basics. For example, if this is a 20 period calculation that you're doing, so अगर आप closing price को ले और आप इसके साथ weight को adjust करें, weight को add करें,
तो जो आपके रीसेंट क्लोज प्राइस है, फर्स्ट रीसेंट कल का, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन, ऐसे करके 20, तो वो क्या करेगा, जो रीसेंट क्लोजिंग प्राइस है उसको मैक्सिमम वेट देगा 20 का, जो कल का क्लोजिंग प्राइस है उसको वेट देगा 19 का, जो उसके पीछे का है उसको मल्टीप्लाई कर देगा 18। सो वेटेड प्राइस, अगर मैं आपको वेटेड प्राइस दिखाऊं in a very rudimentary way, what it will do, it will multiply the CMP multiplied with the weight. So आज का जो क्लोजिंग प्राइस था है ऑन अ 20 पीरियड, अगर मूविंग एवरेज कैलकुलेट करें उसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, कल का क्लोजिंग प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे 19 से, ऐसे करते करते 20 दिन पुराना जो क्लोजिंग प्राइस था that will get multiplied by 1. So the last one gets the least weight, the recent one gets the maximum weight. So इसको एवरेज कैलकुलेट करने के लिए इस पूरे चीज का, ये जो हम लोग ने वेट इनटू प्राइस किया, इस पूरे चीज का, इस पूरे जो 20 टाइम्स वी विल डू दिस, इस 20 टाइम्स करने के बाद इसको सम करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे सम ऑफ द वेट्स, मतलब 1 + 2 + 3 करते करते +20 तक ऐड करेंगे, तब जाके जो वैल्यू निकल के आएगा वो होगा 20 पीरियड weighted moving average. So let's see, let's check. तो ये रहा 20 period simple moving average. Let's go to indicators. Let's go to technicals. Let's scroll down. And after scrolling down, we find moving average weighted. Let's click on the weighted. Moment you click on the weighted, आप उसके settings पे जाइए और same time period रखिए, 20 रखिए, कलर्स को डिफरेंट कर देते, रेड कर देते, डीपर कर देते। अब देखिए, नाउ ऑन आवर चार्ट्स, दिस इज टाटा स्टील डेली चार्ट, क्लियरली देयर आर 2 मूविंग एवरेजेस। द ब्लू वन ओवर हियर इज सिंपल मूविंग एवरेज 20 दिन का, एंड द रेड वन ओवर हियर इज आपका वेटेड मूविंग एवरेज। नाउ व्हाट डू वी सी वेरी क्लियरली, दैट द वेटेड मूविंग एवरेज इज मोर रिएक्टिव टू प्राइस। इसका मतलब क्या है? मूविंग एवरेज कैलकुलेट कहां से हो रहा है? प्राइस से। सो एक नया प्राइस पॉइंट बनता है, एक नया कैलकुलेशन हो रहा है, एंड उस नए कैलकुलेशन के बेसिस पे एक जो आपकी एवरेज है वो मूव कर रहा है, इट्स मूविंग आइदर स्लोपिंग अप और स्लोपिंग डाउन। तो सोचिए, कल अगर जब एक नया क्लोजिंग प्राइस आएगा टाटा स्टील के लिए, वो दोनों मूविंग एवरेज को इंपैक्ट करेगा। सोचिए अगर नीचे खुलता है, अगर टाटा स्टील नीचे रहता है, लेट्स से, so it will reduce the calculation of the average, दोनों का, सिंपल को भी रिड्यूस करेगा और वेटेड को भी रिड्यूस करेगा। बट कौन, किसको ज्यादा इंपैक्ट होगा, कौन जल्दी गिरेगा? वेटेड मूविंग एवरेज, बिकॉज द रीसेंट प्राइसेस हैव मोर वेट। इसका मतलब वेटेड मूविंग एवरेज रिएक्ट्स faster than simple moving average. A weighted moving average will fall, will change its own direction faster, quicker than the simple moving average. इसका आपको एग्जांपल यहीं पे दिख जाएगा. You will get a clear understanding if you focus in this particular zone. Where did the market bottom out? Market कहाँ पे bottom out होता है? यहाँ पे. उसके बाद what did the market do? The market gave a bounce back, थोड़ा सा consolidate, and then it picked up. As it picked up, do you see the slope of both the moving average? Both the moving average are still falling. दोनों ही गिर रहे हैं, बट प्राइस तो धीरे धीरे ऊपर जाना स्टार्ट कर दे। दोनों मूविंग एवरेज के बीच में आप नोटिस करो कि वेटेड मूविंग एवरेज, when did the weighted moving average turn up? Over here. When did the simple moving average turn up? Here. This is a lag. Simple moving average recent price को उतना अहमियत वेट नहीं देता है. That's why it reacts slower later. Weighted moving average recent prices को weight देते हैं, importance देते हैं. That's why it reacts faster. So if you want your moving average to react with price faster, quicker, use a weighted moving average. Now from this concept of weighted moving average comes a concept of exponential moving average, dual exponential moving average, triple exponential moving average. मतलब आप नींबू को निचोड़ते जाओ, just to fit in, just to try and fit in the best moving average, जो आपको कभी नहीं मिलने वाला. So simple moving average, weighted moving average, exponential moving average, double, triple exponential moving average, मतलब उस एवरेज का फिर से एवरेज लेना, फिर से एवरेज लेना. Triangular moving average, adaptive moving average, Hull moving average,
ट्रायंगुलर बताया, ट्रायंगुलर मूविंग एवरेज, 0 लैग मूविंग एवरेज, एक डजन आपको इजीली मूविंग एवरेजेस मिल जाएंगे. Now, the more complex or complicated the calculation does not necessarily mean that the moving average is better. It depends कि आप moving average क्यों charts पे implement करो. What is the role of that moving average on your chart? If it does not serve a purpose, what is the requirement of having the moving average on your chart in the first place? So it's extremely important. So I will definitely not go into each and every moving average because that will probably take the entire day, if not more. Over here, the important question that comes up and which as a trainer I get asked very frequently, कि of all the different types of moving averages, कौन सा सबसे consistent है? Which one should I use? कि मुझे सर इतना एक डजन moving average के बारे में जानना पढ़ना नहीं है. Tell me which one is the most consistent for the purpose of trend, for the purpose of trading, etc. This is my personal opinion. I personally use it. I share it in my classes wherever I take trainings. And I've noticed this कि exponential moving average is the most consistent. Exponential moving average का जो movement characteristics है is very simple to weighted. अगर मैं इस chart पे plot करके आपको दिखाता हूँ, we can take a visual understanding of all the three moving average. I'll come down to moving average exponential. I will click on the settings. I will change it to green. I'll make it thicker, and inputs में I'll make it 20. Now our charts happens to have all the three moving averages, all the three basic type of moving average: simple, weighted, and exponential. आप देखेंगे, you will notice that exponential is somehow like a midway. It is not as slow as simple. At times it is as fast as weighted. It is not as fast as weighted, but उससे थोड़ा सा कम. At times but उसके जो reversal है, they are also not as slow as simple. So overall, it is a good combination. You can say it is calculation wise, it does not consider simple moving average, but plot करने के बाद visually जब आप उसको देखेंगे, आपको लगेगा कि this is taking the, at least visually ऐसा लगता है that it's taking the best of both the worlds. Mathematically ये बोलना गलत होगा because the formula is different. But visually जब हम उसको plot करके देखते हैं, it seems to be like it's doing the best of both the worlds. It's not very fast and neither it's very slow. Now, experiential answer and a simple thing that I would like to share with you over here. The type of moving average does not necessarily makes you a consistent profitable trade. Moving average is just one part of it, plays one small role in the entire game. And what is that role? How can you use it for the purpose of, let's say, intraday trading or for the purpose of positional trading? Uska role kya hai? That is more important rather than deciding ke exponential ho ya weighted ho, rather than deciding that combinations kya hone chahiye, 20 hona chahiye ya 25 hona chahiye ya 55 hona chahiye, right? So I think next session, what we are going to discuss is, rather than talking about how to trade intraday or positional, पहले discuss कर लेते हैं some working combinations. Let's discuss about few combinations of moving averages. Then combinations clear करने के बाद we can go to how to use them for our intraday or positional trading.